हमारे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का सेकंड पार्ट मियोसिस। आइए हम एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। The production of offsprings by sexual reproduction includes the fusion of two gametes with complete haploid sets of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cells. This special kind of cells division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis में क्या होता है कि जो 2n number of chromosomes होते हैं वो meiosis के n में n हो जाते हैं. Meiosis ensures the production of haploid phase of life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. गैमेटोजेनेसिस में जब प्लांट्स एंड एनिमल में गैमेटोजेनेसिस होता है तब मियोसिस होता है जैसे स्पर्म्स फॉर्मेशन ओवम फॉर्मेशन एक्सेट्रा. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but single cycle of DNA replication. Meiosis is further divided into two parts, that is meiosis 1 and meiosis 2, but जो हमारा DNA replication होता है वो सिर्फ एक cycle में होता है. Meiosis 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Meiosis में क्या होता है homologous chromosomes की pairing और recombination होता है हमारे non-sister chromatids जो होते हैं homologous chromosome पर. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Mitotic event can be grouped under following phases. Meiosis 1 में आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. meiosis 2 में आता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2. Meiosis 2 is further divided as we know in prophase 1, prophase 2, etc. Prophase 1. Prophase of the first mitotic division is typically longer and more complex while compared to prophase of mitosis. It has been further divided into 5 phases based on chromosomal behavior: liptotene, zygotene, pachytene, diplotene, dikinesis. During liptotene stage, the chromosomes become gradually visible under light microscope. The compaction of chromosome continues throughout liptotene. जैसे प्रोफेज में होता है माइटोसिस की कि हमें क्रोमोसोम हल्के हल्के विजिबल होते हैं, वैसे ही लिप्टोटीन में होता है हमारे प्रोफेज 1 के. This is followed by second stage of prophase 1 called zygotene. During this stage, the chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis. जो क्रोमोसोम का पेयरिंग प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं synapsis. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate chromosomal synapse is accompanied by formation of chromosome of complex structure called synaptonemal complex. तो हमारे zygote स्टेज में क्या फॉर्म होता है synaptonemal complex. मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ. जैसे ये हमारे homologous chromosomes हैं. जो इसमें एक complex फॉर्म होगा इसे कहते हैं synaptonemal complex. इस complex को कहते हैं हम synaptonemal complex. The complex formed by pairing of synapse homologous chromosome is called a bivalent or tetrad. However, these are more clearly sorry. However, these are more clearly visible at next stage. The first two stages of prophase
are relatively shorter lived compared to the second stage, that is pachytene. During pachytene stage, the four chromatids of bivalent chromosome becomes distinctly clear and appears at tetras. This stage is characterized by appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. देखिए तो क्या आता है, ये हमारा एक homologous chromosome, ये दूसरा homologous chromosome. इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, ये से क्रॉस ओवर कर लेते हैं, इसके जो ये पार्ट होते हैं इसे क्रॉस ओवर कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. Crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosomes. Crossing over is also called enzyme-mediated process, and the enzyme involved in this is called recombinase. Recombinase की help से ही crossing over होता है, recombination occur होता है. Crossing over leads to the recombination of genetic material on the two chromosomes. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of packeting leaving chromosomes at the site of crossing over. तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या था, सबसे पहले डिप्लोट जो हमारा लिप्टोटीन स्टेज होता है, इसके अंदर में हमारे क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली लाइटली एकदम विजिबल होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे. फिर जब जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाते हैं. जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस के अंदर में बनता है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. और हमारे पैकेटिंग में क्या होता है कि हमारे पैकेटिंग में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अक्कर हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और रिकॉम्बिनेशन जो एंजाइम की मदद से होता है उस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेस. अब आइए आगे बढ़ते हैं. The beginning of diplotin is recognized by dilution of synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except the site of crossovers. देखिए तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक होमोलोगस पेयर था क्रोमोसोम का, इसके ऊपर में हमारा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और फिर ये जो दूसरा था, तो इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है. This egg-shaped structure are called schemata. The oocytes in some vertebrate diplotin can last for months or years. The final stage of mitotic process one is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the mitotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleus disappears and the nuclear envelope breaks down. Dikinesis represents transition to मेटाफेज. मतलब जो हमारा डाइकाइनेसिस फेज होता है वो मेटाफेज की तरह होता है. The bivalent chromosome align on the equatorial plate. The microtubules from the opposite poles of the spindle attack to the kinetochore of the homologous chromosomes. आप देख ही सकते हैं इसके अंदर में ये हमारा प्रोफेस वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टेलोफेज वन. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आता है तो हमारे प्रोफेस में. Anaphase 1. The homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated to their centrosomes. Homologous chromosomes separate हो जाते हैं पर sister chromatids associated होते हैं centrosomes से. Telophase. The nuclear membrane and nucleus reappears, cytokinesis follows, and this is called dyad of cell. Although in many cases chromosomes undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus. The stage between two mitotic division is called interkinesis and is generally short-lived.
There is no DNA replication in interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2 and a much simpler prophase than prophase 1. प्रोफेस टू, अब जो हमारा म्यूसिस टू है उसके जो हमारे स्टेप्स होंगे वो बहुत सिमिलर होंगे हमारे माइटोसिस से. प्रोफेस meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before chromosome having fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles normal mitosis. The nuclear membrane disappears at the end of prophase 2. The chromosomes again become compact. At this stage, the chromosomes align at the equator and the microtubules chromosomes align at the equator and the microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids, जिससे हमारे मेटाफेज में होता है माइटोसिस की. एनाफेज. Anaphase. It begins with simultaneous splitting of centrosome of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, allowing them to move towards opposite poles of the cell by shortening the microtubules attached to kinetochores. Telophase. Meiosis ends with the telophase, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting the formation of tetrad cells, four haploid daughter cells. मतलब स्टार्टिंग में जब मेयोसिस स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास में टू सेल्स थे जो डिप्लॉयड थे और अब कितने हो गए हमारे पास में फोर सेल्स जिसका क्रोमोसोमल नंबर क्या है एन. ये क्या थे टू थे लेकिन उसका क्रोमोसोमल नंबर था 2n. Significance of meiosis. Meiosis is the mechanism by which conversion of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexual reproducing organisms. Even though the process per se paradoxically results in the reduction of chromosome number by half, it also increases genetic variability in the population of organism from one generation to the next. Variation are very important for the process of evolution. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है. अगर आपको समरी रीडिंग भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर में भी एक वीडियो बना दूंगी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट सून. हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो भी बता दूंगी. थैंक यू.